ओके सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ योर ऑब्स एंड गाइने है ना. ऑब्स का सेकेंड पार्ट कर रहे हैं. द फर्स्ट पार्ट हैज बीन ऑलरेडी अपलोडेड टू द चैनल एंड मोस्ट ऑफ यू हैव सीन इट. इफ you have not seen it, just go into the same playlist, you will find the video there. So this is the second part, that is embryology and placenta. We'll be doing embryology and placenta in the second part of this obs and gyne. द क्वेश्चन नंबर 45 अप टू 44 वी हैड ऑलरेडी डन है ना. यहाँ तक हमने ये पूरा कर लिया है ऑलरेडी. वी हैव डन दिस अप टू 44 नंबर. ऑक्सीटोसिन तक हमने कर लिया था. सो नाउ इट्स टर्न फॉर 45 नंबर. सो लेट्स सी द क्वेश्चन. Infant brought to the casualty with dehydration and tachycardia. The infant is presenting with dehydration and tachycardia. Upon examination, the genitalia is ambiguous. The genitalia is not clear. It is ambiguous and blood work shows hyponatremia and hyperkalemia. You are getting the picture, clinical picture in your mind. Deficiency of which of the following is the reason for this condition? So you just need to get the buzzwords out of here. So look, see, this is dehydration. So dehydration generally, it is generally due to salt wasting. In this case, this is due to salt wasting, that is generally due to aldosterone deficiency. Aldosterone deficiency. Again, let's see this hyponatremia and hyperkalemia. These two things है ना, hyponatremia and hyperkalemia. Again, this is suggesting what? An electrolyte imbalance, and that is again due to what? Aldosterone deficiency. So 2 points you have already got that. This is aldosterone deficiency. So deficiency of aldosterone generally in an infant है ना, in an infant. So the diagnosis is going towards congenital adrenal hyperplasia. That also the salt wasting form of the congenital adrenal hyperplasia. This diagnosis was a bit tricky to make, but if you just get this two thing कि डिहाइड्रेशन हो रहा है, हाइपोनेट्रेमिया एंड हाइपरकैलेमिया, वहाँ से जस्ट आपको निकाल लेना कि डेफिशिएंसी किसकी वजह से हो सकता है. आपने पढ़ा है ऑलरेडी इन योर कॉन्जेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, सीएच में यू हैव ऑलरेडी स्टडी, बस उसको यहाँ पे अप्लाई करना था. सो अगर वो आपने निकाल लिया, सो दिस इज गोइंग टुवर्ड्स योर व्हाट? कॉन्जेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, जिसमें जनरली एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी हो सकती है. अब यहाँ पे एल्डोस्टेरोन तो दिया नहीं हुआ, और एक और चीज़ यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एम्बिगुअस. जनरली जेनिटेलिया इज एम्बिगुअस. सो जनरली एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी है, जेनिटेलिया एम्बिगुअस हो. सो दिस इज द केस ऑफ कॉन्जेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया. और ये जो हाइपरनाइट्रेमिया हाइपरकैलेमिया वगैरह जो हो रहा है, दैट इज जनरली ड्यू टू द salt wasting form of this disease, and this dehydration is also due to that aldosterone salt wasting cause only. So now you have to find out which is the reason for, which is the deficiency here. So the deficiency of 21 hydroxylase enzyme जो आपने पढ़ा है congenital adrenal hyperplasia में. The most common cause of congenital adrenal hyperplasia is nothing but 21 hydroxylase deficiency. ठीक है, 21 hydroxylase deficiency. So our answer here will be 21 hydroxylase deficiency. Now look, 7 hydroxyprogesterone, 17 hydroxyprogesterone is generally increased in 21 hydroxylase deficiency. ये जो congenital adrenal hyperplasia की केस है, इसमें generally 17 hydroxyprogesterone is increased in this case. So ये तो आंसर हो ही नहीं सकता. If I talk about generally 11B hydroxylase, so this will generally cause hypertension. ठीक है, it will cause hypertension. If I talk about 3 beta HSD, that will generally cause genital ambiguity, is very less common in this case. So this most appropriate answer for our this question is 21 hydroxylase deficiency, which is the most common cause of CAH. You got it? Now let's move to the next point. After 28 weeks of periods of gestation, major amount of generally amniotic fluid is secreted from. So look, this amniotic fluid कहाँ से secrete होता है? So I have already told you about this है ना, और मैं और बताऊंगा आपको जब फर्दर में जाएंगे हम जनरली, तो फर्दर जो नेक्स्ट पार्ट्स होंगे उसमें और इस पे करेंगे. बट जनरली हेयर आई विल टेल यू द ओवरऑल थिंग्स कि जनरली फीटल स्किन इट जनरली secretes till 20 to 24 weeks. After this, after the 20 to 24 weeks, the fetal skin will get keratinized, और जब वो keratinized हो जाएगा तो then it will not be generally secreting this amniotic fluid. So ये जब कब तक करेगा? Up to 20 to 24 weeks. If I talk about the fetal urine, it is the main contributor after 24 weeks. So fetal urine, जब fetal kidney क्या हो जाएगा, generally it will be developed, then the main contributor will be the fetal urine that contributes the major part of the generally amniotic fluid after 24 weeks. Next is placental cell membrane. It is generally
giving a very minor contribution there. If I talk about the plasma, it is same as generally the placental cell membrane. उसी चीज को यहाँ पे प्लाज्मा करके पूछ दिया है. नेक्स्ट, साइज ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन. साइज ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एट टाइम ऑफ ओव्यूलेशन इज नथिंग बट 20 mm. ये तो याद करना होगा आपको. दैट इज 20 mm. दैट इज एवरेज ऑफ 18 to 20 mm विल बी गिवन इन सम क्वेश्चन. सो दिस इज द एवरेज 18 to 20 mm. उसमें जो सबसे क्लोजेस्ट होगा उसको आप मार्क करके आइएगा. रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ फॉलिकल आपसे पूछा जा सकता है. सो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ फॉलिकल इज 2 to 3 millimeter per day. 2 to 3 mm per day is the rate of growth of follicle. Which of the following is not related with fertilization? Which of the following, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं and they are asking that which of the following is not related with fertilization. fertilization से कौन रिलेटेड नहीं. लोग sperm crosses corona radiata, ठीक है, it is related. implantation occurs after 6 days, ठीक है. Zona pellucida facilitation by hyaluronidase, of course, ठीक है. Zona reaction attracts the sperm, no. Which of the following is not related to fertilization? This Jonah reaction attracts the sperm. This is the wrong answer. Why? Look, what is this Jonah reaction? First of all, you must know what is this Jonah reaction. So Jonah reaction is once the sperm penetrates the Jonah pellucida, the ovum becomes impermeable. Now the ovum एक अगर entry कर गया तो now the ovum becomes impermeable to other sperms and this prevents the polyspermy conditions. And this reaction, therefore Jonah reaction does not attract sperm. ये क्या कर देता है? एक जब अंदर चला जाता है तो क्या करता है? रोक देता है बाकी स्पर्म को अंदर आने से. So is it attracting the sperm or is it just what to say, stopping the many other sperms to come inside? It is stopping, it is not attracting. That's why this is Jonah reaction वाला जो यहाँ पे दिया हुआ है कि Jonah reaction attracts the sperm, ये गलत है. That's why this is our answer here. और थोड़ा सा मैं आपको steps of fertilization बता देता हूँ. From here also many questions are being asked. So the first step here given is capacitation. So capacitation is a period of conditioning that occurs in the female reproductive tract. ठीक है, you must remember this. It occurs in the female reproductive tract. That is capacitation, and this itself has been a question in many examination many a times. Chemotaxis की बात करूँ तो sperms are attracted to an egg through the process that is called as chemotaxis. ठीक है, chemotaxis. Taxis means movement हो गया and chemo means in presence of certain chemicals. ठीक है, next देखो, binding of progesterone plus surface receptor on the sperm, increase in intracellular calcium है ना, कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन व्हिच इंक्रीजेज स्पर्म मोटिलिटी. सो कीमो जनरली क्या था? टैक्सिस था. एंड नेक्स्ट है कीमोकाइनेसिस. तो कीमोकाइनेसिस क्या करेगा? स्पर्म मोटिलिटी में हेल्प करेगा. देन अकर्स एक्रोजोम रिएक्शन अकर्स इन विसिनिटी टू oocyte. oocyte के नजदीक में जाके होगा. देयर अकर्स ब्रेक डाउन ऑफ द स्पर्म सेल मेम्ब्रेन एंड रिलीज ऑफ एंजाइम्स नीडेड फॉर फ्यूजन टू oocyte मेम्ब्रेन. दिस इज कॉल्ड एज एक्रोजोम रिएक्शन. जोना पेलिसुडा इज अ ग्लाइकोप्रोटीन लेयर सराउंडिंग द मेम्ब्रेन ऑफ oocyte. ठीक है, नेक्स्ट देखो, वंस स्पर्म रीचेज होगा देयर इज रिलीज ऑफ hyaluronidase है ना, hyaluronidase penetration of corona radiata and cumulus cell by sperm occurs. Glycoproteins on the outer surface of the sperm then bind with glycoproteins on the zona pellucida of the ovum and release of acrosine occurs. Acrosine digests the zona pellucida and membrane of the oocyte. Next is after this sperm enters the cytoplasm, intracytoplasmic structures, the coronal granules arrange themselves in an orderly fashion around the outermost portion of the cytoplasm just beneath the cytoplasmic membrane. Swelling of the sperm head then occurs giving rise to male pronucleus. Now during this the egg completes its second meiotic division, casting of the second polar body to a position beneath the zona pellucida. So these are all the steps of fertilization. और ये स्टेप्स ही आप अगर एक बार देख लो तो इसमें से 2-4 क्वेश्चंस कभी कभार इधर उधर या तो एनाटमी से जो जनरली एम्ब्रियोलॉजी पोर्शन है वहाँ से या फिर इन ऑप्शन गाइने से भी पूछा जा सकता है. ठीक है, फिजियोलॉजी से भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जोना पेल्यूसिडा? सो ऑल एवरीथिंग जस्ट वी रीड हियर है ना. सो व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ द जोना पेल्यूसिडा? जोना पेल्यूसिडा इज व्हाट? इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन लेयर सराउंडिंग द मेम्ब्रेन ऑफ द oocyte. सो इट हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ मल्टीपल स्पर्म एंट्री दैट इज थ्रू जोना रिएक्शन. जहाँ पे हमने पढ़ा था पोलीस्पर्मी को ये क्या करता है जनरली? इट inhibits the polyspermy. आगे देखो, which of the following is a true statement? A, B, C और D, 4 ऑप्शन है यहाँ पे. प्लासेंटा इज फॉर्म्ड एट मोरुला स्टेज. इज इट प्लासेंटा is formed at morular stage? No, placenta is formed by trophoblast which first appears at blastocyst stage. याद रखना ये, ठीक है. आगे देखो, implantation starts on 10th day. No, it starts on 6th and completes by the 10th day. ये स्टार्ट्स कब होता है? 6th डे पे एंड इट विल जनरली कंप्लीट बाय द 10th डे. ड्यूरिंग इनिशियल वीक्स कॉर्पस ल्यूटियम सर्वाइवल इज ड्यू टू LH. नो, इट इज जनरली ड्यू टू HCG. ठीक है, सर्वाइवल corpus luteum survival is due to LH. No, it is generally HCG. fertilization takes place in ampulla. This is right. So ये हमारा क्या हो गया? ट्रू स्टेटमेंट. fertilization takes place in the ampulla of the generally fallopian tube. आगे देखो,
इम्प्लांटेशन अकर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन अकर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन कितने, अभी जस्ट ऊपर हमने बात किया, दैट इज यहाँ पे देखो 6 डेज होना चाहिए। 6 डेज किसमें, 7 8 डेज, 10 12 डेज, 8 to 10 डेज, 5 to 6 डेज, दिस इज आवर बेस्ट आंसर, 6 to 7th डे। जेस्टेशनल सैक कैन बी विजुअलाइज्ड बाय यूएसजी, है ना, मैंने ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट 2 टाइप्स ऑफ यूएसजी, one that is transvaginal and the next is transabdominal, in the first part only I have already told you। So gestational sac can be visualized by USG via 5 weeks, ठीक है, via 5 weeks। नेक्स्ट देखो 4.5 वीक्स पे जनरली कहाँ पे दिखेगा, टीबीएस पे दिखेगा। यॉल्क सर्किट जनरली 5.5 वीक्स एंड फीटल कार्डियल एक्टिविटी एट 6.5 वीक। यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग कि जो टीबीएस पे आज दिख रहा है वो ठीक 1 वीक के बाद पीएएस पे भी दिख जाएगा। सो यू हैव टू जस्ट एड 1 वीक देयर। आगे चलो, कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन ऑकर्स ऑन, दिस कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन ऑकर्स ऑन 15th डे। आगे चलो थोड़ा सा बताया तो यहाँ पे लुक, following the ovulation, if we take about the cycle of 28 days, है ना, so following the ovulation 14th day the remaining follicular cells left by the ovulated follicle differentiate into the corpus luteum, meaning luteum means generally what, yellow, so corpus luteum इसलिए yellow body बनता है, that's why it is called as corpus luteum। और वो बाद में जाके क्या हो जाएगा, corpus albicans बनेगा। so albicans means generally what, white, so generally corpus albicans means white body, ठीक है, so corpus albicans बनेगा। Corpus luteum secretes progesterone which causes secretory changes in the endometrium। Look, in the menstrual phases, day 1 to 5, day 6 to 14 and day 15 to 28, we divide it into the 3 phases। Ovarian phase जो होता है जनरली, उसमें जनरली 1 to 5 days में early follicle will be there, है ना, and there will be 6 to 14 days में follicular phase and 15 to 28 days is called as luteal phase। if I talk about the endometrial phase, so 1 to 5 days is menstrual phase, है ना, next 6 to 14 days is proliferative phase and 15 to 28 is secretory phase। if I talk about the estrogen or progesterone, in the early 1 to 5 days there will be low level of estrogen and progesterone, in the 6 to 14 days the estrogen will increase, whereas there will be 15 to 28 days में there will be the main hormone that will be regulating, there will be progesterone, और यही progesterone जब खत्म होता है तो generally it sloughs off, all the endometrial layer sloughs off and that results in the menstruation, ठीक है। so this is very important। आगे चलिए देखते हैं, placental blood supply is established on, so this placental blood supply is generally established by 3rd week। ये मैंने in the first पार्ट ऑल्सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट जो प्राइमरी विलाई है, सेकेंडरी विलाई है ना, ये सब चीज़ कब बनता है करके। सो नाउ लेट अस सी अ लिटिल बिट अबाउट द इंपॉर्टेंट इवेंट्स following the fertilization। We have seen everything over the fertilization। After fertilization 0 hour पे there will be fertilization, day 15 from last menstrual period and 30 hours पे after the fertilization, after 30 hours there will be 2 cell stage which is called as blastomeres। 40 to 50 hours पे there will be 4 cell stage and 72 hours पे there will be 12 cell stage। 96 hour पे 16 cell stage। morula enters the uterine cavity। now 5 to 6th day पे blastocyst attachment to the endometrial surface। 10 to 11th day पे trophoblast invade endometrial sinusoids establishing uteroplacental circulation। so 10th to 11th day पे there will be uteroplacental circulation established। interstitial implantation completed with entire decidual coverage occurs on 10th to 11th day। 12th day पे there will be primary villi, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया। 12th to 15th day पे there will be secondary villi and tertiary villi and 17th day पे fetoplacental circulation will be completely established now। so this is now what this 17th day। तो 17th day यानी कि कितना हो गया आपको, 7 जा 21 डेज। सो 21 डेज यानी कि 17 डे इसके बीच में आ रहा है। इट इज बिटवीन 2nd to 3rd वीक। सो बेटर ऑप्शन है विल बी 3rd, ठीक है, बेटर ऑप्शन है विल बी 3rd वीक। लेबिया माइनोरा इज होमोलोगस टू व्हिच ऑर्गन में, लुक लेट्स कंप्लीट एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस। लुक एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, इट्स फीमेल डेरिवेटिव एंड मेल डेरिवेटिव, जो होमोलोगस और एनालोगस करके पूछते हैं। चलो the genital swelling in the male will be forming labia, female in the female it will be forming labia majora, and the same genital swelling will be forming generally a scrotum in the male derivative। it is the male derivative part of generally the genital swelling। so labia majora is generally homologous to scrotum in male। ऐसे करके आप याद रख सकते हो। genital fold that is the embryological structure, it forms labia minora in the female and it will form penile urethra in the male। so this both are homologous to each other। genital ridge की बात करूँ, the embryological structure that is genital ridge, it will form ovary in the female and testis in the male। so ovary and testis are homologous to each other।
जेनाइटल ट्यूबरकल की बात करूं so it will form generally clitoris in the female and it will form generally penis in the male. So if they are asking like which structure in the female is homologous to generally penis in male, so that is nothing but clitoris. ठीक है, आपको इतना याद रखना है. यहाँ पे तीन चीज़ें हमने कर लिया, एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी हमने कर लिया, वी हैव डन अबाउट द डिफरेंट होमोलोगस ऑर्गन्स इन द मेल एंड फीमेल आल्सो. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस बनता है. सो लेबिया माइनोरा इज होमोलोगस. सो लेबिया माइनोरा देखो, लेबिया माइनोरा इज जनरली ओके which organs in male. Labia majora will be with scrotum, this is wrong. Labia minora is generally with penile urethra, it is with penile urethra. So this will be our answer. ये थोड़ा मिस्टेक है ऊपर. Inferior 1/3 of the vagina is derived from, ठीक है, inferior 1/3 of the vagina is derived from. Look, upper 2/3 of the vagina is derived from the mesoderm of the Mullerian duct, है ना, and this inferior or the lower 1/3 of the vagina is derived from the urogenital sinus. ठीक है, urogenital sinus. आगे देखो, when is the embryo termed as fetus? The embryo will be termed as fetus on which day? Look, you need to see 3 periods here. Ovular or germinal period, it is from the first 2 weeks following the ovulation. Next, embryonic period will be from 3rd to 10 weeks following ovulation, 8 weeks post conception. 8 weeks post conception, और मोस्ट ऑफ द टाइम यही चीज पूछेंगे हमसे 8 weeks करके, एंड दिस हैज बीन आस्क्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन पीडिया आल्सो. सो यू शुड बी वेरी clear about this concept, that is 3rd to 10 weeks following ovulation and 8 weeks post conception, और सबसे ज़्यादा यही देंगे आपको जनरली 8 weeks post conception, it will be embryonic period. Up to 8 weeks it will be embryonic period, and fetal period after the 8 weeks or generally 10 weeks after ovulation and after 8 weeks following the conception, and generally the ends in delivery. So this will be the fetus. fetus कब बोलना है ना, देखो फीटस कब बोलना है और जनरली इम्ब्रियो कब बोलना है, इन दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है. सो अप टू 8 वीक्स जनरली पोस्ट कंसेप्शन इट विल बी इम्ब्रियो, है ना, एंड आफ्टर 8 वीक्स इट विल बी कॉल्ड एज टिल बर्थ, इट विल बी कॉल्ड एज फीटल पीरियड. ठीक है, फीटल पीरियड. उसके बाद क्या बोलेंगे, इन्फेंट बोलेंगे. लुक, सो व्हेन इज द embryo termed as fetus? After 10 weeks from the last menstrual period. यहाँ पे this question has been asked in obstetrics, that's why they are giving the last menstrual period वाला thing, so we have to just add 2 weeks there. और अगर यही पीडिया में पूछेंगे तो वहाँ पे 8 weeks वाला ऑप्शन देंगे हमको, और आपको एकदम क्लियर रहना वहाँ पे. ठीक है, 8 weeks पोस्ट जनरली कंसेप्शन, दोनों एक ही चीज़ें हैं, बस पूछने का जो तरीका है दैट इज जनरली अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग. बट 2 weeks लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से बोले तो 2 week ऐड कर देना, नहीं बोले तो जनरली 8 weeks कर देना. लुक, व्हेन डज द हेमेटोपोएसिस शिफ्ट टू लिवर फ्रॉम द यॉक सैक? हेमेटोपोएसिस के लिए यू हैव सीन दिस इन योर पैथोलॉजी आल्सो. जो पैथोलॉजी की लेक्चर्स मैंने ली थी उसमें भी मैंने आपको बताया था. सो लेट्स सी, इन दिस फीटल हेमेटोपोइस, लुक, हेमेटोपोइसिस, हेमेटोपोइसिस मीन्स, हेमेटो मीन्स जनरली ब्लड एंड पोइसिस मीन्स फॉर्मेशन. सो लुक, फीटल हेमेटोपोइसिस जनरली यॉल्क सैक, यॉल्क सैक में कब से होता है, 14th day अप टू 1 to 3 months. फ्रॉम 14th days to 1 to 3 months is the generally period where yolk sac is generally is the site for hematopoiesis. Next, greater than 3 months, that is 6 to 10 weeks में generally क्या हो जाएगा, liver will take over that, and greater than 4th month the bone marrow will take over that, and after 19 to 20 weeks spleen will also be helping in the fetal hematopoiesis. यहाँ पे देखो, when does the hematopoiesis shift to liver from yolk sac? From liver देखो 6 to 10 weeks liver पे जाएगा, yolk sac से कब 1 to 3 months से generally greater than 3 months, that is 6 to 10 weeks पे generally it will be going to liver. So best option here will be 10 weeks. Maximum number of oogonia, maximum number of oogonia will be at birth हमारे पास कितना होता है 2 million, and at puberty there will be 4 lakh, and it is simply asking maximum number of oogonia. So maximum number of oogonia will be generally 7 million by 5th month of intrauterine life. By 5th month of intrauterine life you are so much rich in cases of the oogonia, that is generally by the 5th month of the intrauterine life. फर्स्ट पोलर बॉडी इज रिलीज एट द टाइम ऑफ, फर्स्ट पोलर बॉडी इज जनरली रिलीज, यहाँ पे आप 4 million में जाकर टिक नहीं लगा देना, ये 4 लाख से कंफ्यूज होकर. दिस इज एट प्यूबर्टी, दैट इज ऑल्सो 4 लाख नॉट 4 million. ठीक है, at first the first polar body is released at the time of generally puberty. The first polar will be released at the time of puberty, and the second polar body after the fertilization. ठीक है, fertilization पर generally the second polar body will be released. Which of the following statement is not true about placenta? Look, weight of full term placenta is 508 and volume is 497 ml. This is almost right. ठीक है, which of the following statement is not true पूछ रहा है. At 17th week weight of placenta is equal to the weight of fetus. ये भी सही है. It has 4 to 6 lobes. No, this is generally wrong. Total of lobes remains the same throughout the gestation. This is also true.
Maternal side of generally placenta is derived from which layer? Maternal side of placenta is generally derived from decidua basalis. How? ये जो लेटेस्ट एक एग्ज़ाम था, मैंने आई जस्ट सॉ ऑन प्रेप, आई थिंक प्रेप का जो एक एग्ज़ाम हुआ था जो फ्री में दिया गया था उनके ऐप पे, वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था. सो लुक दिस डेसिडुआ, इफ आई टॉक अबाउट द डेसिडुआ इज नथिंग बट अ थिकन्ड वास्कुलर इंडोमेट्रियम ऑफ द प्रेग्नेंट यूटरस which is called as decidua. So if they ask you what is decidua is nothing but a thickened vascular endometrium of the pregnant uterus, that is called as decidua. It has three parts: superficial or compact layer, that the role in the trophoblastic invasion and penetration. It helps in general trophoblastic invasion and penetration. The immediate spongy layer, it will be called as the layer of placental separation, and there will be a thin basal layer. So three layers will be there: superficial, immediate, and a thin basal layer will be there. The decidua can also be divided into three areas, parts और areas अलग है. So now come to areas, और सबसे ज़्यादा questions यहीं से पूछते हैं. That is decidua basalis. So this is the site of attachment of the placenta. This is the site basalis. Base पे कहीं भी कोई भी चीज़ attach होता है base पे. So decidua basalis is the site of attachment of placenta. Decidua capsularis. If I talk about the decidua capsularis, this decidua capsularis portion of the decidua between the embryo and uterine cavity. This is the portion of the decidua between the embryo and uterine cavity. Decidua paritalis की मैं बात करूँ, और vera इसको भी बोलते हैं. decidua paritalis और vera portion of the placenta not related to implantation. So this is the यानी पी फॉर पेरिटालिस एंड पी फॉर प्लासेंटा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे. तो इसको क्या याद रखना है? नॉट फॉर प्लासेंटा. दिस इज द portion of the placenta not related to generally implantation. The only portion of the placenta which is not related to implantation is decidua paritalis. The decidua capsularis and paritalis fuse and obliterate the decidual space by around 10 to 12 weeks of gestation. So now after seeing this much, you will be good to go with any questions asked from this basalis, capsularis and paritalis layer. सारी चीज़ें मैंने एक ही जगह पे आपको करवा दिया. So true about the fetal surface of placenta, ये decidua basalis हो गया, maternal side of placenta. True about the fetal surface of the placenta की अगर मैं बात करूँ, so it has umbilical cord attachment site. Cotyledons over a generally fetal surface, these all things are wrong. What is the term for placenta when umbilical cord attached to the margin of the placenta? If the umbilical cord is attached to the margin of the placenta, that is called as battledore placenta. Very important, याद रखना, एक ये term याद रख लो, battledore placenta, and generally umbilical cord is attached to the margin of the placenta. Nitabux membrane is absent in generally placenta acreta. Placenta acreta क्या है? villi attached to myometrium. Villi will be attached to myometrium. Absence of Nitabux membrane leads to in all except placenta previa, placenta accreta, placenta increta, placenta percreta. Okay, look, what is this placenta accreta? ऊपर भी मैंने बात किया था. This placenta accreta is the villi attached to myometrium. Increta मतलब villi is invading the myometrium. Invading the myometrium, ऊपर वाला में क्या था? सिर्फ attached था. Now percreta means villi penetrate through the myometrium and to or through the myometrium or serosa. Complete penetration हो जाएगा. That is called a percreta. ठीक है, placenta percreta. So absent of Nitabux membrane leads to all except, so absent of Nitabux membrane leads to all of these things except generally placenta previa. Placenta previa, look, placenta previa. चलो आगे करते हैं. नेक्स्ट लेबर एंड डिलीवरी की बात करते हैं. सो द नेक्स्ट पोर्शन विल बी लेबर एंड डिलीवरी, और द नेक्स्ट पार्ट इन दिस ऑब्स्टेट्रिक इज लेबर एंड डिलीवरी. दैट इज 67 नंबर से स्टार्ट होगा. एंड ड्यूरिंग डिलीवरी द हेड वाज डिलीवर्ड. The head was delivered, but the shoulders were stuck. Now tell me, you have got the diagnosis already in your mind. Head has been delivered, but the shoulders are stuck there. So what is the most likely diagnosis? This is nothing but shoulder dystocia. शोल्डर डिस्टोसिया. इसमें ज़्यादा कुछ और मैं एक्सप्लेन करूँ क्या? जरूरत नहीं है. सो दिस इज शोल्डर डिस्टोसिया. लुक, आई टेल यू एवरीथिंग. व्हाट इज दिस सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन? सो दिस सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन इज नथिंग बट डिस्प्रोपोर्शन इन द फीटल हेड एंड पेल्विस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस और द लार्ज बॉडी ऑफ द फीटस, मैक्रोसोमिया के कंडीशन में. सो दिस इज सिफेलोपेल्विक. नाम से ही पता चल रहा है, सिफेलोपेल्विक यानी कि हेड, और जनरल पेल्विक मतलब द नीचे का पोर्शन है वो. सो सिफेलोपेल्विक मीन्स फीटल एंड पेल्विक हेड के बीच में जनरली क्या हो रहा है? Fetal head and pelvis के बीच में there is disproportion in the size. This can generally be due to the contracted pelvis of the mother, or it can be due to the large body of the baby, that is macrosomia. ऑक्सीपिटो पोस्टेरियर क्या है? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन विथ फीटल बैक डायरेक्टेड पोस्टेरियर. फीटस का जो बैक होता है दैट विल बी डायरेक्टेड पोस्टेरियरली. इफ आई टॉक अबाउट शोल्डर डिस्टोसिया, व्हेन फीटल शोल्डर बिकम्स इंपैक्टेड बिहाइंड द मैटरनल प्यूबिक सिम्फेसिस प्रिवेंटिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी आफ्टर हेड हैज इमर्ज्ड. इस पॉइंट पे आप याद रखना. नेक्स्ट
after one or two parts if I do, the question will be there where you have to just put your mind on this point कि हेड बाहर आ गया है और बॉडी नहीं आ रहा, उस टाइम पे हम शोल्डर डिस्टोसिया बोलेंगे। अगर हेड नहीं आया तो उसको हम शोल्डर डिस्टोसिया नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रीच प्रेजेंटेशन। सो ब्रीच प्रेजेंटेशन इज द लॉन्गिट्यूडनल लाइन इन व्हिच द बटक इज प्रेजेंटिंग पार्ट विथ और विदाउट द लोअर लिम्स, विथ और विदाउट द लोअर लिम्स। सो दिस इज जनरली ब्रीच प्रेजेंटेशन। और ब्रीच पे तो कितने क्वेश्चंस बनेंगे, यू ऑल नो अबाउट दिस। After the McRoberts maneuver fails in the management of the shoulder dystocia, what is the next step in the management? Shoulder dystocia क्या है? We have already seen this. Now let us know about the management of this शोल्डर डिस्टोसिया। सो इसमें मैनेजमेंट में एक मैक-रोबर्ट्स मैन्यूवर करके होता है। व्हाट इज दिस मैक-रोबर्ट्स मैन्यूवर? द मैक-रोबर्ट्स मैन्यूवर इज द इमीडिएट मैनेजमेंट स्टेप हाइपर फ्लेक्शन ऑफ द मदर्स लेग, हाइपर फ्लेक्शन ऑफ द मदर्स लेग ऑन टू द एब्डोमेन ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। दिस इज कॉल्ड एज मैक-रोबर्ट्स मैन्यूवर। और एंड दिस इज जनरली डन इन केस ऑफ शोल्डर डिस्टोसिया मैनेजमेंट, ठीक है। शोल्डर डिस्टोसिया आ नहीं रहा तो जनरली क्या करेंगे, इमीडिएट मैनेजमेंट स्टेप है क्या कि हाइपर फ्लेक्शन, मदर के जो लेग है उसको हाइपर फ्लेक्स कर देंगे ऑन टू द एब्डोमेन ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, एंड दिस इज कॉल्ड एज मैक-रोबर्ट्स मैन्यूवर। सो इफ इट फेल्स, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? लुक, वुड्स मैन्यूवर, गैस्किन मैन्यूवर, जैवानेली मैन्यूवर एंड सुप्राप्यूबिक प्रेशर। तो इसके बाद देना क्या है, नेक्स्ट स्टेप इज सुप्राप्यूबिक प्रेशर। लुक, suprapubic pressure is the directional pressure to generally 45 degree downward directional pressure to maternal abdomen just above the pubic symphysis, ये करना है हमको। एंड नेक्स्ट वुड्स मैन्यूवर, ये क्या है, इट इज द 180 डिग्री रोटेशन ऑफ द पोस्टीरियर शोल्डर। गैस्किन मैन्यूवर इज मूविंग मदर टू एन ऑल फोर पोजीशन, ठीक है, ऑल फोर पोजीशन विथ बैक आर्च एंड वाइडनिंग ऑफ द पेल्विक आउटलेट, ठीक है, ये भी कर सकते हैं हम। जैवानेली मैन्यूवर, जैवानेली मैन्यूवर इज नथिंग बट pushing fetal head back in with performing a C-section or generally internal cephalic replaced followed by the C-section. So this is generally maneuver. So हम क्या करेंगे, if the McRoberts maneuver fails, then we will go for suprapubic pressure. A primigravida presents at 1 p.m. with 5 centimeter dilated cervix and at 4 p.m. देखो 1 PM और 4 PM यानी कि 3 आवर्स अपार्ट में कितना हुआ है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर डायलेटेड सर्विक्स हुआ है। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप? तो इसमें समझना क्या है कि नॉर्मल रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेटेशन कितना, 1 सेंटीमीटर पर आवर होना चाहिए। यहाँ पे 3 जनरली 3 1 2 4, तो 3 आवर्स में जनरली कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर का डायलेटेशन हो जाना चाहिए, है कि नहीं। बट यहाँ पे कितना हुआ है, सिर्फ 5 था और 6 हुआ है। सो ओनली 1 सेंटीमीटर डायलेशन इज अटेंड। सो व्हाट शुड वी डू, वी शुड नाउ सी कि ये क्या है, स्लो प्रोग्रेस ऑफ लेबर हो रहा है, क्योंकि जो 1 सेंटीमीटर पर आवर होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सो जनरली दिस इज वी हैव टू नाउ गो फॉर असेसिंग द स्लो प्रोग्रेस ऑफ द लेबर। वी शुड नॉट वेट फॉर कंप्लीट डायलेटेशन, वी शुड नॉट इंड्यूस लेबर हेयर एंड वी शुड नॉट प्रोसीड विथ इंटरवेंशन। वी शुड फर्स्ट असेस फॉर द स्लो प्रोग्रेस ऑफ द लेबर एंड देन वी शुड गो फॉर द ऑल द दिस टू थिंग्स। या तो लेबर को इंड्यूस करना है या फिर जनरली प्रोसीड विद द इंटरवेंशन, क्या करना है उसके बाद आपको करना है। सो बेटर ऑप्शन हेयर विल बी असेस फॉर द स्लो प्रोग्रेस ऑफ द लेबर। आगे देखिए next, okay, uterus inversion management. What is the management of the uterus inversion? And this question has been asked so many times in AIMS and the next that is nothing but NEET PG. उसमें भी ये क्वेश्चन कहीं से उल्टा पुल्टा इधर उधर करके ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आई विल टेल यू एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस यूट्रस इन्वर्सन वंस एंड ऑल फॉर here only. Look, uterus inversion is an extremely rare but a life threatening complication in the third stage. ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यूट्रस जो इन्वर्सन है, इट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ व्हिच स्टेज ऑफ लेबर। सो दिस इज द life threatening complication, but it is very rare, very rare, but a life threatening complication in third stage in which the uterus is turned inside out partially or completely, ठीक है। नेक्स्ट देखो डायग्नोसिस कैसे करना। और रेड वेलवेटी मास एट द इंट्रोइटस इज सीन एंड दिस फिगर हैज बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम्स इन द नीट पीजी दैट अ रेड वेलवेटी मास इंट्रोइटस इज सीन and the uterus is not palpable per abdomen or palpated much below the umbilicus and the patient will be in shock on a per vaginal examination of boggy mass will be felt, and this is very important line, कुछ भूल जाओ बट ये याद रखना है इसमें, ठीक है। Management for this will be call for extra help before the shock develops, urgent manual replacement is done and we should not wait for, मैंने कॉल कर दिया बट मैं वेट करके नहीं, यू शुड ट्राई मैनुअल जनरली व्हाट रिप्लेसमेंट शुड बी ट्राइड। शिफ्ट द पेशेंट टू OT फॉर रिपोजिशन अंडर जनरल एनेस्थेसिया इफ दिस मैनुअल रिप्लेसमेंट फेल्स इन द लेबर रूम। आगे देखो मैनुअल टेक्निक्स की अगर मैं बात करूँ, सो देयर विल बी 2 टेक्निक्स, दैट वन इज जॉनसन्स मैनूवर कैन बी डन टू पुट दिस बैक इनसाइड, है ना, एंड दैट इज द मैनुअल रिपोजिशन टेक्निक एंड ओ सुलिवन मेथड। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, ओ सुलिवन मेथड, मैं इसको क्वेश्चन मार्क कर दे रहा हूँ, दिस हैज बीन आस्क्ड। सो ओ सुलिवन मेथड इज रिपोजिशनिंग यूजिंग the normal saline
और यही चीज़ पूछा गया था क्वेश्चन में, ठीक है, नीट पीजी के क्वेश्चन में। आगे देखो, यूट्रस इन्वर्जन मैनेजमेंट इज मैनुअल रिप्लेसमेंट ऑफ द यूट्रस, ठीक है, मैनुअल रिप्लेसमेंट ऑफ द यूट्रस। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, नेवर, यू शुड नेवर ट्राई द जनरली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑक्सीटोसिन। रादर अगर आप ऑक्सीटोसिन दे रहे हो तो उसको रोक दो, है ना, यू शुड जस्ट स्टॉप द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन यू इफ यू आर ऑलरेडी गिविंग इट, ठीक है, रादर स्टॉप कर दो, नेवर गो फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन इन केस ऑफ यूट्रस इन्वर्जन। A multigravida female with previous history of C-section presented in antenatal care OPD. In which of the following condition vaginal delivery can be considered? She is a multigravida female with previous history of C-section. C-section का हिस्ट्री है, सो कौन से केस में, लुक, जे शेप्ड C-section, यहाँ पे अगर आप vaginal delivery का अगर रिस्क लेते हो तो देयर विल बी इंक्रीज रिस्क ऑफ यूटराइन रप्चर, सो यू शुड नॉट चूज फॉर vaginal delivery। ट्रायल में भी मत लेके जाओ। ब्रीच अगर है तो अगेन इट विल बी इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ rupture, and if you are going for vertical C-section it will again increase the risk of uterine rupture. So pre-eclampsia जो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है सी नंबर पे, pre-eclampsia is not a contraindication of vaginal delivery, so we can give a trial of vaginal delivery in case if she is having pre-eclampsia। ये तीनों में नहीं देंगे हम। During the delivery of the baby which of the following maneuver is done when fetal scalp is visible at vulva? The fetal scalp is now visible at the vulva, so here which of the following maneuver is done? Look, I'll tell you about all the maneuvers sir। ये जो पिनार्ड मैनूवर है, दिस इज जनरली फॉर ब्रीच एक्सट्रैक्शन, सो ये देंगे यहाँ पे हम नहीं। फीटल स्कार्प ऑलरेडी इज विजिबल एट वाल्वा, मतलब ब्रीच तो है ही नहीं है। नेक्स्ट, लॉबसेट, सो लॉबसेट जनरली द रोटेशन ऑफ द ट्रंक ऑफ द फीटस ड्यूरिंग अ ब्रीच टू फैसिलिटेट डिलीवरी ऑफ एक्सटेंडेड फीटल आर्म्स एंड शोल्डर्स। नो, ऑफ कोर्स विल नॉट ट्राई दिस लॉबसेट ऑल्सो बिकॉज इट इज ट्राइड इन केस ऑफ ब्रीच, और फीटल हेड आ रहा है तो ये तो कहीं से भी ब्रीच नहीं है। आगे देखो, रिटजन, रिटजन इज द एक्सट्रैक्टिंग फीटल हेड यूजिंग वन हैंड टू पुल फीटल chin from the between the maternal anus and coccyx and other hand on the fetal occiput। Yes, this will assist in the smooth delivery of the fetal head outside, easily आ जाएगा vulva से। So this is generally, this will be the best choice here, Ritgen। Mauricio smelly wheat, है ना, Mauricio smelly wheat, this is the maneuver of choice for delivering after coming head in ब्रीच। अगेन ऑल द थ्री ऑप्शंस वेर फॉर जनरली ब्रीच, और क्वेश्चन में दिया हुआ था कि फीटल हेड इज सीन एट द वाल्वा, सो इजीली यू कैन जनरली। थोड़ा सा अगर आप वहाँ पे ध्यान दे दो कि यहाँ पे तीनों चीज़ें तो ब्रीच के लिए बोल रहे हैं, और जो क्वेश्चन वहाँ बोल रहा है कि फीटल हेड आ रहा है, तो क्या ये ब्रीच प्रेजेंटेशन है जो मैं ये करूँगा? नहीं करूँगा। सो दैट इज जनरली थोड़ा सा हमको लगाना है, बस जस्ट पुट अ लिटिल बिट माइंड देयर। ऑक्सीटोसिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, लुक, ऑक्सीटो, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस जो बनते हैं ना ऐसे ही, तीन क्वेश्चंस आप ऐसे ही, तीन ऑप्शंस आप ऐसे ही क्या कर सकते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम आप हटा सकते हो। सो जो डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन भी बन जाएगा वहाँ पर, जो एक रहेगा वही तो आंसर होगा, तीन अगर आपने हटा दिया तो। सो जस्ट पुट अ लिटिल बिट ऑफ योर माइंड देयर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑक्सीटोसिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, सो लुक, ऑक्सीटोसिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, सो ऑक्सीटोसिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्लासेंटा कवरिंग इंटरनल ओर्स। So for this, once and for all, you should see what are the contraindications of oxytocin in your whole OBGYN gynae, so that will solve your everything related to that। Contraindications of oxytocin की मैं बात करूँ, so abnormal fetal position is the contraindication of oxytocin। Cephalopelvic disproportion again is the contraindication of generally oxytocin। Cervical cancer, elective induction of labor, fetal distress, fetal prematurity, placenta previa और भाषा प्रिविया, और एक हमने ऊपर देखा था यूट्रस इन्वर्जन, दैट इज ऑल्सो नॉट अ कंडीशन वेयर यू शुड गिव ऑक्सीटोसिन, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, प्लासेंटा कवरिंग इंटरनल ओएस विल बी आवर गुड आंसर यार। आगे देखो, इंडक्शन ऑफ लेबर शुड नॉट बी डन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, इंडक्शन ऑफ लेबर शुड नॉट बी ट्राइड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में यू कैन डू, प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स यू कैन डू, सेंट्रल प्लासेंटा प्रिविया नेवर ट्राई हियर इंडक्शन ऑफ लेबर, ठीक है। अब रप्चर प्लासेंटा में यू कैन डू। कॉन्ट्राइंडिकेशंस टू इंडक्शन ऑफ लेबर, दो चीज़ें यहीं पे याद कर लो, कॉन्ट्राइंडिकेशंस टू ऑक्सीटोसिन एंड द कॉन्ट्राइंडिकेशंस टू इंडक्शन of labor। So what are the contraindications? Different contraindications to induction of labor are placenta previa or central or major degree। Placenta previa, central or major, both degree are contraindications to general induction of the labor। Vasa previa, umbilical cord prolapse, primary genital herpes infection, cephalopelvic disproportion, invasive cervical carcinoma, transverse lie, previous history of uterine rupture or classical cesarean section, and hypersensitivity to cervical ripening agent। So in this cases generally you should not go for induction of labor। A 32 weeks pregnant female presented with blood pressure 150/100 mmHg, 150/100 mmHg, and proteinuria on urine dipstick test is 2+।
Which of the following is the most likely diagnosis? Okay, so hypertension है और proteinuria, it is going towards preeclampsia. This is not a rocket science. Look, what is this preeclampsia? Preeclampsia is defined as BP greater than 140/90 on 2 occasions and 4 hours apart. In addition to the blood pressure criteria, proteinuria of greater than or equal to 0.3 grams in a 24-hour urine specimen of protein, that is mg per deciliter, or creatinine mg per deciliter ratio of प्रोटीन बाय क्रिएटिनिन रेशियो जो होता है वो 0.3 और हायर, और यूरिन डिपस्टिक प्रोटीन ऑफ 1 प्लस इफ अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इज अनअवेलेबल इज रिक्वायर्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ प्री इक्लेम्सिया। यहाँ पे देखो यूरिन डिपस्टिक कितना बता रहा है, 2 प्लस बता रहा है, 1 प्लस पे ही हम डायग्नोस कर सकते हैं, सो दिस इज 2 प्लस, ऑलरेडी ये डायग्नोसिस हो गया। और हाई बीपी विथ साइंस ऑफ मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट इज ऑल्सो प्रीक्लैम्सिया लाइक रेज्ड लिवर एंजाइम्स और रेज्ड सीरम क्रिएटिनिन विथ नो अदर ऑब्वियस कॉज। सारे चीज़ों को हटा दो, अगर बच गया तो दैट इज प्रीक्लैम्सिया। डिरेंज्ड डॉपलर, IUGR और ओलिगोहाइड्रोमियस और persistent neurological signs, headache, blurring visions, etc. can also be considered। ठीक है, यहाँ पे बेस्ट हो गया प्री एक्लेम्सिया। फ्रैक्चरिंग क्लेविकल टू जनरली फैसिलिटेट द डिलीवरी ऑफ बेबी। बताओ कैसा है ये? We have to fracture the clavicle to facilitate the delivery of the baby. So this is what? This is generally the management of shoulder dystocia। अगर नहीं निकल रहा है तो क्लेविकल को फ्रैक्चर कर दो, उससे क्या हो जाएगा, वहाँ से वो इजीली बाहर आ जाएगा। सो दिस इज जनरली कॉल्ड एज क्लीडोटोमी। यू मस्ट रिमेंबर दिस इज कॉल्ड एज क्लीडोटोमी। एक वर्ड याद कर लो, क्लीडोटोमी, जिसमें फ्रैक्चरिंग ऑफ क्लेविकल इज डन टू फैसिलिटेट द डिलीवरी ऑफ द बेबी। ऑलरेडी प्रेजेंट्स विद ब्लड प्रेशर 146/90 mmHg एट 30 वीक्स जेस्टेशन। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? सो 30 वीक्स पे जनरली क्या कर रहे हैं, 34 वीक्स पे जनरली सी इज प्रेजेंटिंग विथ 146/90, है ना। सो इट इज जनरली दिस case which it is giving in the question, it is generally what it is suggesting? It is suggesting the patient is suffering from the pregnancy induced hypertension, 34 weeks पे। so this is generally suggesting the pregnancy induced hypertension। to diagnose it whether it is gestational hypertension or preeclampsia, following investigations can be done, and those investigations include urine dipstick कि preeclampsia है कि नहीं, and the next CBC, LFT, KFT and USG can be done। so all the given options are the investigations to have to be done, but the most immediate list, ये देखो CBC, USG, LFT और urine dipstick। so यहाँ पे क्या है, बट द मोस्ट इमीडिएट टेस्ट दैट कैन बी डन फॉर अर्ली डायग्नोसिस इज यूरिन प्रोटीन मेजरमेंट वाया डिपस्टिक, जो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था। यूरिन प्रोटीन ग्रेटर दैन, जनरली ग्रेटर दैन और इक्वल टू +1, इट कन्फर्म्स प्री इक्लेम्सिया। सो दिस इज जनरली यूरिन डिपस्टिक टेस्ट विल बी द बेस्ट आंसर। होगा तो सारे के सारे यहाँ पे आंसर्स ही होंगे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द आंसर्स, बट यूरिन डिपस्टिक टेस्ट इज द बेस्ट आंसर here। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर contraindications of normal vaginal delivery। all of the following are contraindications of normal vaginal delivery except, look, previous 2 LSCS don't go for vaginal delivery, previous classical generally cesarean section again don't go for generally normal vaginal delivery, central placenta previa again you should not go for generally the normal vaginal delivery। so previous macrosomia, this is not a contraindications of generally the नॉर्मल वैजाइनल डिलीवरी। प्रीवियस में मैक्रोसोमिया था तो इसमें भी मैक्रोसोमिया होगा जरूरी है, और USG पे वी कैन ऑलरेडी सी दैट। Rytodrine to prevent premature labor will cause all of the complications in mother। so they are asking this, I have already completed in your pharma also। so they are generally asking Rytodrine, the complications of the Rytodrine। so look, what is this Rytodrine? Rytodrine is a beta 2 agonist। Rytodrine is a beta 2 agonist, tocolytic drug to stop the premature labor। to stop premature labor we can use Rytodrine। so Rytodrine generally causes all of the complications, it can cause tachycardia, tremors, pulmonary edema, but it never causes hypoglycemia, rather the side effect it causes hyperglycemia। ठीक है, it causes hyperglycemia। so you must remember this। what is the reason for abdominal pain, है ना? abdominal pain to the mother when she is breastfeeding her baby। she is breastfeeding her baby, during the time of breastfeeding she is having the abdominal pain, she is having abdominal pain। so what is the reason for this? So the reason for this is the oxytocin। look, when you are doing the breast feeding, और शायद ये मैंने फर्स्ट वाले जो पार्ट था उसमें भी ऑलरेडी करवा दिया है, दैट द व्हेन यू डू द ब्रेस्ट फीडिंग द ऑक्सीटोसिन विल बी रिलीज। ऑक्सीटोसिन इज द मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए जो हार्मोन चाहिए, दैट इज जनरली ऑक्सीटोसिन। एंड ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग द मदर रिक्वायर्स द लेट डाउन और द जनरली मूवमेंट ऑफ द जनरली that milk from the breast, है ना? so चाहिए, so that time there will be the release of oxytocin, and oxytocin will trigger contraction of uterus also।
और अगर व्हेन ऑक्सीटोसिन इज जनरली ट्रिगरिंग द मायोपिथेलियल सेल्स एंड जनरली द यूटरस, है ना, तो जब यूटरस का जनरली कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मदर एक्सपीरियंसेस पेन इन एब्डोमेन कॉल्ड एज आफ्टर पेन एंड दिस इज द डायग्नोसिस। ये भी पूछ सकता है कि डायग्नोसिस किस चीज़ का है, सो दिस इज द डायग्नोसिस ऑफ आफ्टर पेन्स इन फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर द बर्थ। दिस इज जनरली ड्यू टू ऑक्सीटोसिन, दिस इज ऑक्सीटोसिन। ये ऊपर का जो 78 नंबर में हमसे जो कुछ क्वेश्चन पूछा गया था उसका मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ यहाँ पर कि एब्सोल्यूट इंडिकेशंस ऑफ सिजेरियन सेक्शंस एंड रिलेटिव इंडिकेशन ऑफ सिजेरियन सेक्शन। लुक, सेंट्रल प्लासेंटा प्रीविया इज जनरली अ एब्सोल्यूट इंडिकेशन ऑफ जनरली cesarean section. Contracted pelvis or cephalopelvic disproportion can be an absolute indication of cesarean section. In this case you have to do the cesarean section. Here you can do, it depends upon the condition, you can do or you cannot do. Pelvic mass causing obstruction, pelvic mass causing obstruction, again you have to go for cesarean section. Advanced carcinoma cervix, you have to go for generally the C-section. Vaginal obstruction, atresia or stenosis, of course you have to go for C-section. Relative indications, previous cesarean section है, so this is a relative indication, you have to assess the condition, है ना. Non reassuring fetal heart rate, dystocia, antepartum hemorrhage, malpresentation, failed surgical induction of generally the labor, so this all are generally the relative indications. और पहले वाला क्या था, absolute indications of our C-section. बहुत क्वेश्चन है यार यहाँ पे. वुमन विथ हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस सिजेरियन प्रेजेंटेड विथ प्रोलॉन्ग्ड लेबर, पेशेंट इज हाइपोटेंसिव, फीटल हार्ट रेट इज नॉट ऑडिबल, फीटल पार्ट्स आर इजिली पैल्पेबल ऑन पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, व्हाट इज द डायग्नोसिस. क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे लोग, women with history of previous cesarean section presented with prolonged labor, patient is hypotensive now, fetal heart rate is not audible, बहुत डेंजर कंडीशन है, fetal parts are easily palpable on per abdominal examination, what is the diagnosis. Here this is nothing but going towards generally uterine rupture, और जिसकी वजह से hypotension में भी present कर रहा है patient. Look, a uterine rupture is a complete division of all three layers of the uterus. Most uterine ruptures occur when the uterus is gravid in the setting of a trial of labor after cesarean delivery. So that's why after generally cesarean delivery, if you give a trial of the normal delivery and a trial of labor, that will be generally a little bit a risky condition. More often the rupture is secondary and associated with a pre-existing incision, anomaly or injury to the myometrium. Symptoms will be sudden severe abdominal pain, decreased or cessation of uterine contractions, you cannot feel the uterine contractions, hematuria will be there, peritoneal irritation, shoulder tip pain or chest pain can be there, abnormal fetal lie will be there, retraction of the presenting part will be there. The most consistent early indicator of uterine rupture is the onset of a prolonged, persistent and profound fetal bradycardia. ठीक है, हार्ट रेट जो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रहा था, हार्ट रेट इज नॉट जनरली ऑडिबल. आगे देखो, कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विथ आईवी बोलस ऑक्सीटोसिन. सो ऑक्सीटोसिन के जनरली कॉम्प्लिकेशन पूछ रहा है. सो लेट्स सी व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ ऑक्सीटोसिन. हमने ऊपर ही पढ़ा था, ग्लैंड, मल्टीपैरा, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, हिस्ट्री ऑफ क्लासिकल सिजेरियन, हिस्ट्री ऑफ 2 or more, LSCS, malpresentation, obstructed labor, fetal distress and hypovolemia. These are the contraindications of oxytocin. So यहाँ पे the complication associated with IV bolus oxytocin, it will generally cause हाइपोटेंशन एंड टैकीकार्डिया. हाइपोग्लाइसेमिया नहीं, हाइपरटेंशन नहीं, हाइपरग्लाइसेमिया भी नहीं, हाइपोटेंशन ऊपर भी हमने देखा. आगे देखो, और 24-year-old वुमन विजिट्स लेबर रूम एट 37 weeks. पेशेंट हैज माइल्ड लेबर पेन फॉर 10 hours एंड सर्विक्स इज परसिस्टेंटली 1 centimeter डायलेटेड एंड अनइफेस्ड. व्हाट विल बी द प्रिफर्ड मैनेजमेंट इफ द सर्विक्स इज जनरली अनइफेस्ड एंड 1 centimeter डायलेटेशन ही दिख रहा है. सो दिस इज द लेटेंट फेज ऑफ द लेबर, दिस इज द लेटेंट फेज ऑफ द लेबर. सो हियर विल गिव सीडेशन एंड विल हैव टू वेट, क्योंकि 1 centimeter ही डायलेट हुआ, पूरा का पूरा 10 centimeter चाहिए डायलेटेशन होगी. सो दिस सीडेशन एंड वेट अंटिल द प्रोग्रेशन ऑफ द लेबर इज अटेंड. लुक, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रख दिया है स्टेजेज ऑफ लेबर, है ना, ड्यूरेशन प्राइमरी पैरा में और मल्टी पैरा में कितना कितना होता है, आप एक बार देख लेना. ठीक है, बस जब आप ये नोट्स आप जब रिवाइज करोगे बस एक बार देख लेना, है ना. That is a little bit important. Which of the following is used for the dilatation of cervix? Dilatation of cervix के लिए कौन सा होगा? Mifepristone? No. Laminaria tent? No. This is a hygroscopic dilator. This was recommended earlier, but nowadays you have better options, so you don't recommend this laminaria tent. Misoprostol जो है, this is the PGE1 analog, and this is best for this case, used for cervical ripening and inducing the uterine contraction both. So this is very important here. आगे देखो, आइडेंटिफाई द गिवन मैन्यूवर शोन इन द. बहुत जगह पे ये लेमिनेरिया टेंट देते हैं ऑप्शन में, सो डोंट बी कंफ्यूज. इफ यू हैव मिसोप्रोस्टॉल इन द ऑप्शन, गो विद दैट. आइडेंटिफाई द गिवन मैन्यूवर शोन इन द इमेज. यहाँ पे जो मैन्यूवर, ये देखो,
ये हाथ लगा रहे हैं यहाँ पे फीटल हेड पे जनरली, सो दिस इज जनरली पॉलिक्स ग्रिप, दैट इज द लियोपोल्ड 3 मैनूवर, ठीक है। लियोपोल्ड मैनूवर से क्वेश्चन पूछता है। लियोपोल्ड 1 में जनरली क्या होता है, इट इज यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन हेड एंड द ब्रीच। लियोपोल्ड 3 विल बी जनरली डन टू डिटरमाइन फीटल प्रेजेंटेशन एंड स्टेशन। एंड लियोपोल्ड 2 वो हमने लियोपोल्ड 2 जो है वो हमने ऑलरेडी देखा है। लियोपोल्ड 4 जो है जनरली दैट इज द लियोपोल्ड 3 टू डिटरमाइन द फीटल प्रेजेंटेशन एंड स्टेशन, वही जो फीटल हेड दिख रहा है। सो दिस इज लियोपोल्ड 3 दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलिक्स ग्रिप। लियोपोल्ड 4 जो है दैट इज टू नो द एंगेजमेंट और फेसिंग पेशेंट्स, द डॉक्टर हैज टू स्टैंड फेसिंग द पेशेंट्स टू नो द एंगेजमेंट, एंगेज हुआ कि नहीं। Peak of the prostaglandins occurs in what stage? Peak of the prostaglandins generally occurs in the third stage of the labor. You must remember this. A patient is in labor है ना, ये ऊपर वाला जो था इसमें भी शायद दिया हुआ है ना। आगे चलिए, ठीक ठीक ठीक, आप देख लेना एक बार। Patient is in labor on per vaginal examination. Cervix is 5 centimeter dilated and fully effaced. She is in which stage of labor? She is in the first stage of labor. That is 0 to 10 centimeter dilatation. That is the first stage of the labor, है ना. And the third stage of the labor is stage of placental expulsion from birth to placenta expulsion. That is the third stage of labor. बेबी डिलीवरी हो जाने के बाद जनरली वी थिंक कि नहीं लेबर का स्टेज खत्म है. नो, देयर इज स्टिल, दैट इज द थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर. That is called as the stage of placental expulsion, and from birth to placental expulsion it occurs, and peak of the prostaglandin occurs in this stage. So PGEE will generally be occurring in this third stage जो ऊपर में पूछा गया था. सेकेंड स्टेज की बात करूँ तो स्टेज ऑफ फीटल डिसेंट एंड डिलीवरी, फुल सर्वाइकल डायलेटेशन टू बर्थ 0 to 10 सेंटीमीटर, दैट इज फुल जो होता है सर्वाइकल डायलेटेशन, दैट इज फर्स्ट स्टेज. उसके बाद जो है स्टेज ऑफ फीटल डिसेंट, फीटल हेड आएगा बाहर और डिलीवरी हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज जनरली द सेकंड स्टेज. एंड द थर्ड स्टेज अभी हमने देखा एक्सपल्सन ऑफ प्लासेंटा तक, ठीक है. नेक्स्ट देखो, फोर्थ स्टेज विल बी द स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम बर्थ टू 4 आवर्स पोस्ट पार्टम. ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इन प्राइमी ग्रेविडा वो दिया हुआ है यहाँ पे, देख लो 2 आवर्स. एंड इन टर्न कंडक्टिंग डिलीवरी ऑब्जर्व्स मदर डेवलपिंग एब्डोमिनल पेन, ब्रेथलेसनेस, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया एंड कोलैप्सिंग. शॉक इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन ड्यू टू ब्लीडिंग. एग्जामिनेशन रिवील्स लार्ज बॉगी मास एट द इंट्रोइटस. पॉसिबल कॉजेज, दिस इज नथिंग बट गोइंग टुवर्ड्स यूटेराइन इन्वर्जन. ऊपर ही हमने देखा था हाइपोटेंशन, देख रहे हैं यहाँ पे. ओके, सो 2-4 क्वेश्चन और करें. आई एम टायर्ड अ बिट, मैं अभी थोड़ा टायर्ड हो गया और बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बाकी है इस टॉपिक में. सो आई थिंक आई विल स्टॉप हेयर एंड वी विल डू द नेक्स्ट इन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 19 नंबर से हम वहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है. 19 नंबर. सो दिस मच फॉर दिस वीडियो. आई विल ट्राई टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप लाइकिंग द वीडियो एंड कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल. थैंक यू ऑल.